All right, so let's start with the session for today. Hello and welcome to Unacademy. My name is Aditi Bhatt, and good afternoon to all of you. So, from today onwards, we'll be starting our session on 2 p.m. Okay, right. So, today I'll be taking a session on daily legal current affairs, wherein we will be analyzing the Hindu newspaper for 19th May. All right. Okay, so let's start with some. Okay, so before we proceed further, here's the link for my Telegram channel. So you can join my Telegram channel for regular updates, right, related to the classes. I'm also sharing the Hindu newspaper PDF for students who do not have subscription so that they can refer to the newspaper and attend the classes. It becomes convenient for them to understand as to what I'm relating with. And I also am planning to share certain conceptual, important concept based notes on the Telegram channel itself. So that will also benefit all the students in future for their exams. Okay, so I will be compiling the relevant and the most important bits of all the news that I am covering. Okay, and so I'll be sharing that on monthly or bi-monthly basis, right? I've started compiling it, and now I will, once I am done with the research and with the entire drafting and editing of it, then I'll start sharing it on a regular basis on the Telegram channel. And I am also sharing the PDF of the Hindu newspaper, so you can join the channel, and along with the links for the related sessions on YouTube. Okay, and you can join the channel with the help of the link, or you can even scan the barcode that's given here, right? And if you're planning to take any of the subscriptions from the Unacademy platform, then to unlock free classes and subscription discounts, you can use the referral code ABCLAT. All right. Okay, so let's see the today's highlights. So today we will be looking at 10 particular news items. So which cover several important concepts from CLAT perspective. So first is DU Ambedkar University to share resources. So here we will be talking about the National Education Policy of 2020, and we will be looking at what the NEP 2020 talks about, right? And then the second highlight, second news item relates to Delhi government seeks centers not to appoint PK Gupta as the new chief secretary. Now, this news has been going on. We will be looking at the amendment, that is the GNCTT Amendment Act of 2021. Just for, so I will be also revising with you whatever we have covered so far, and the special provisions in the Constitution, right, and how it is relevant from your CLAT point of view. Okay, so then the third news item is Tamil Nadu's amended law on Jallikattu is valid. That has been stated recently by the Supreme Court. So earlier there was a lot of controversy surrounding Jallikattu, which is a process, okay, a religious a practice, right, in Tamil, performed in Tamil Nadu. So we will be looking at what
constitutes an essential religious practice. And there have been several judgments, several, you will see issues and concepts revolving around that. And that is how the doctrine of essentiality is the test that Supreme Court and different high courts use for determining which practice should be taken forward and which should not be, right? So we'll see, we'll also look into that. Okay, then the fourth news item is chalk out plans to ensure children are not malnourished. So we will see what are the provisions related to malnourishment, or what are, constitutionally how it is relevant for us. Then inside Jharkhand, sorry, this there has been error in the spelling error. So inside Jharkhand single teacher school, right? So just a second. So this needs to be J. Okay. So inside Jharkhand's single teacher schools, so we will be looking at the Right to Education Act of 2009, right? It is important from both legal as well as GK point of view to know certain concepts and certain laws, right? Have a basic understanding of these laws, right? Then a warning. This is again, yesterday also, in the yesterday's newspaper, there was an article related to climate change. I was planning to cover it, but I had to complete the Manipur issue, and that was an important issue that I covered yesterday. So that's why, and today again, you have a climate change related article. So I will be covering the basics of climate change and the related climate change conventions and conferences, right, from your exam point of view. Then the seventh is Cyclone Mocha. India sends relief materials to Myanmar. Here we will be talking about, we will be looking at this news article from disaster management perspective. Also, we will be looking into the India's disaster diplomacy, right? Then what are RBI regulations on green deposits? Now, this particular article, I just wanted you all to read this article. There are certain important and relevant points in the article, in the news item itself. Okay, so we'll do a reading together. Then the ninth is India is planning to hold Quad meet in Japan, says Foreign Secretary. Now, this particular news item specifically mentions a new international grouping. So we will be talking about FIPIC, this new international grouping, and what it is about. Then the 10th, the final news item for today will be Center pushes vaccination as lumpy skin ravages cattle. So here we will be looking at animal husbandry and constitutional provisions related to animal husbandry. Okay, so let's start with today's session. So the first news item that we are covering, DU Ambedkar University, that is Delhi University, and BR Ambedkar University on Thursday signed a memorandum to ensure to an memorandum of understanding, that is MOU, to ensure optimum utilization of resources. The two universities will share resources like libraries, archives, research, laboratory, archives and research laboratories, auditorium, sports grounds, stadiums, conference halls, and other facilities. And this has been done. The collaboration was done keeping in mind the guidelines of the National Education Policy of 2020. So let's see, what is National Education Policy of 2020. So Union Cabinet in 2020, of course, they approved the National Educational Policy of 2020 with an aim to introduce several changes in the Indian educational system. So this was a complete overhaul, right? You can say it is a complete overhaul of uh, the education system, country's education system. Just a second. Right. Okay. The NEP 2020 aims at making India, so the vision is to make India, or turn India into a global knowledge superpower, a global knowledge superpower.
The cabinet also approved the renaming of the Ministry of Human Resources. So the earlier, when this thing happened, the Ministry of Human Resources and Development, we used to have MHRD. This was renamed to Ministry of Education. The NEP cleared by the cabinet is only one third major revamp of the framework of education. Right, okay. So let's see what are some important points introduced by, or some salient features of the national education policy. First is universalization of education from preschool to secondary level. Universalization of education, that is first, which means the education will be looked at from a universal approach. Earlier we had a very restricted approach to education, right? A very, you can say, domestic approach, not an international level approach or a global, so now we will be universalizing the education, and ensuring the gross enrollment ratio. So the focus will be also on increasing the gross enrollment ratio. That is how many students, that is, it's also known as GER, that is how many students are enrolling. Okay, what is the ratio of students who are uh, enrolling successfully to schools, and this also includes who all are completing their education. कई बार ऐसा होता है, right, कि due to various factors, earlier this has been noticed कि enrollment तो हो जाता है students का, but because of various factors, for example, a lot of issues are faced by women, or young, girl children, that related to hygiene issues, related to clean washrooms, and various other, and children also face other issues like no facilities, lack of facilities, or lack of drinking, proper drinking water facilities. So ये जो basic facilities हैं, उनके ना होने के कारण बहुत सारे बच्चे, they leave out of the school. So enrollment ratio तो होता है, but उसके साथ what is the ratio, what is the, how many students are actually completing their education, that is also important, and that will also be looked at from the new education policy perspective. Other point which I forgot to mention in universalization of education was, earlier क्या होता था, पहले क्या होता था, the education was focused on only, getting a degree. ठीक है, डिग्री मिल गई, डिग्री मिल जाएगी तो ओनली, द फोकस वाज ओनली एट गेटिंग an education degree. But now the education is more focusing towards what are the future jobs that are, coming up, because आज के टाइम में, बहुत सारी ऐसी jobs हैं which have become irrelevant in today's time, and today also अभी बहुत सारी ऐसी jobs हैं जो कि future में जाके irrelevant हो जाएंगी. ठीक है, तो अगर हम पुराने पैटर्न से पढ़ाई करते रहेंगे तो हो सकता है we may not, be up to date, or we may not be able to catch up later. तो इसीलिए एजुकेशन अब क्या हो रहा है, नाउ ऑफ कोर्स ये इसमें इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, बिकॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ने दे दिया है, अब उसी में प्रोग्रेस और इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है. ठीक है, एंड नाउ ऑफ कोर्स जैसे दे आर फोकसिंग ऑन स्किल डेवलपमेंट. Education में they are focusing on skill development amongst students, skill development, capacity building. ठीक है, वो इसलिए because the times are changing and we need to be updated along with the time. ठीक है, to bring 2 crore out of school children back into mainstream through an open schooling education. So एक और they have also introduced open schooling education system. एंड जो अभी 10+2 सिस्टम है, जो 10+2 सिस्टम है ना, कि 10th तक पढ़ाई करी और फिर उसके बाद +2 भी किया, लाइक 11th एंड 12th. ठीक है, जो जनरली इट इज कॉल्ड हायर सेकेंडरी, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय 5+3+3+4. ठीक है, सो स्टार्टिंग के 5 years, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट 3 years, then next 3 and next 4. ये जो 4 वाला है, this is from 9 to 12,
and this is from 6 to 8. This is from I think to uh, 3 to 5, class 3 to 5, and this is from the nursery, or you can say class UKG, LKG, then 1, 2, 3, so on. Basically, the first nursery, and then you have those kindergarten part ना, तो वो initial 5 years, then 3 plus 3 plus 4. ठीक है, ये होगा. This will be the pattern that will be followed, and this will be corresponding to the age of the students. ठीक है, 3 to 8 years के बच्चे वो 5 year वाले उसमें होंगे, then 8 to 11 years, then of course 11 to 14 years, and then जो एकदम लास्ट के 14 to 18 years वाले 4 years वाले, यानी क्लास 9 to 12 में ये इन पे फोकस होगा, so that they can be prepared for college level education. Okay, so this is although this is related to school level, we should be focusing on higher education, because इस particular news item में higher education की बात करी गई है. So higher education में अगर हम लोग देखें, right, holistic undergraduate education will be a flexible curriculum, can be of 3 years or 4 years with multiple exit options. तो ये सबसे अच्छी बात ये करी कि जैसे स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, राइट, तो उनको एक साल ड्रॉप करना पड़ता है बहुत केसेस में. अगर उनका लेट्स से फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है एग्जैक्टली 12th के बाद, तो दे हैव टू ड्रॉप. तो अब वो ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा, वो जो ड्रॉप वाला सिस्टम है वो खत्म हो गया है. बेसिकली व्हाट दे कैन डू, दिस इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव, कि जो अगर वो कोई कोर्स लेते हैं, ठीक है, कोई भी कोर्स लिया उन्होंने, लेट्स से दे आर परसुइंग, उन्होंने उनका लेट्स से आईआईटी या नीट में नहीं हुआ, तो उन्होंने बीएससी किसी एक कॉलेज में बीएससी के कोर्स में ज्वाइन कर लिया, ठीक है, एंड फिर वहां पे दे आर प्रिपेयरिंग ऑल्सो, और उनका साल भी वेस्ट नहीं हो रहा है. तो फिर 1 year, विद इन 1 year में दे कैन इवन एग्जिट एंड देन गो टू वट एवर कॉलेज दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर. तो ऐसा भी हो सकता है. और इफ दे वांट टू, क्या होता है ना कि 18 years की एज में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली उनको करना क्या है, ठीक है. तो ये भी गवर्नमेंट ने इस पॉइंट को भी सोच के, ये इस फैक्टर को भी, एज फैक्टर को भी ध्यान में रख के ये पॉइंट डाला है कि क्या होता है कि हम लोग लेट्स से किसी एक कोर्स में एंटर किया हम लोगों ने ये सोच के कि हाँ, बिकॉज वी हैव सर्टन ideas about that particular course, so we entered a course, and then we realized कि maybe it's not suitable to what my characteristics are, what my aptitude is. तो अगर aptitude ये समझ में आ जाए, so 1 year, तो the person let's say BSc का अगर कोर्स है जो कि 4 years का कोर्स है, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में ही अगर पर्सन अगर 1 year कंप्लीट करता है, then that person will get a सर्टिफिकेट, ठीक है. तो वो मतलब वो जो साल होगा वेस्ट नहीं जाएगा, सीवी में ऐड होगा. अगर 2 साल करके निकलता है तो इट विल बी समवॉट लाइक डिप्लोमा और समथिंग, ठीक है. 3 साल में करके निकलता है तो भी कुछ ऐसा, आई थिंक इट विल बी अ डिप्लोमा और समथिंग. आई विल जस्ट, ठीक है. सो इट बेसिकली एंड 4 साल कंप्लीट करता है, देन इट विल बी अ कोर्स डिग्री, ठीक है, इट विल बी अ प्रॉपर डिग्री. तो ये सारे चीजें कर दी है जिसमें कि सीवी अफेक्ट ना हो, ड्रॉप करने की वजह से किसी का भी नुकसान ना हो. और जो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम को इनकॉर्पोरेट कर दिया है. अभी जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो क्लैट की, बट बहुत सारे लोग क्लैट के साथ साथ सीयूईटी की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, राइट. नाउ ऑफ कोर्स यू हैव सीयूईटी एलएस आल्सो, यानी कि लॉ के लिए भी सीयूईटी के एग्जाम की तैयारी हो रही है. तो ये जो चेंज आया कि एक ओवरऑल एक एग्जाम होना चाहिए सारे यूनिवर्सिटीज के लिए, ठीक है, जहाँ पे एकेडमिक कोर्सेज हैं. लॉ इज सपोज टू बी अ प्रोफेशनल कोर्स, राइट. सो एकेडमिक कोर्सेज एंड प्रोफेशनल कोर्सेज में डिफरेंस होता है. तो जो एकेडमिक कोर्सेज की जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, they can come under one umbrella of CUET. Students can give their exam and will not only just be percentage based. So percentage बाद में काउंट होगा, बट उनके जो रिजल्ट्स हैं, दिस विल ऑल्सो बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव, कि उनके जो रिजल्ट्स हैं कंपटीशन में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, उसके बेसिस पे भी दे विल बी अलॉटेड यूनिवर्सिटीज,
ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम किया है, बिकॉज क्या हो रहा था बहुत सारे स्टेट्स में, बिकॉज ऑफ चीटिंग ऑल्सो, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ आई मीन, सो क्या होता है कि अलग अलग बोर्ड्स में, एक तो ये है कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं, कुछ कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जहाँ पे चीटिंग होती है, इस वजह से भी उन स्टूडेंट्स के, उन स्टेट्स के कुछ स्टूडेंट्स के नंबर्स और परसेंटेज बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, बट दे आर नॉट कॉम्पिटेंट विद अदर, दे आर नॉट इक्वली कॉम्पिटेंट विद अदर स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्टेट्स। अच्छा, दूसरा ये भी रहता है कि हर बोर्ड के, फॉर एग्जाम्पल स्टेट बोर्ड्स आर कंसिडर्ड टू बी टफर, तो उनके जो मार्क्स होते हैं, परसेंटेज होते हैं, वो ज्यादा, उनका क्राइटेरिया होता है, थोड़ा टफ होता है क्राइटेरिया उनका मार्क्स देने का, right? They have a stringent criteria for allotting marks, but when you see CBSE or ICSE, that is ISC, तो ये सारे जो boards होते हैं या IB boards, उनका थोड़ा lenient रहता है, right? So they give out a lot of marks, तो उससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट, लेट्स से किसी स्टेट बोर्ड में उस स्टूडेंट ने 85% लाया है, एंड वो स्टूडेंट अगर वो सेम एग्जाम दे अगर ICSE या CBSE के बोर्ड में, तो दैट स्टूडेंट माइट इवन गेट 95 और बियॉन्ड, ठीक है। तो ये है, बट वही है कि बिकॉज मार्क्स देने का क्राइटेरिया हर बोर्ड का अलग होता है, इसलिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म लेके आया, इंट्रोड्यूस किया गया, सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स कैन appear under this one this thing, and this is also ये जैसे चेंज है, ये जो इंट्रोडक्शंस हैं, ये भी दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो जैसे मैंने बोला कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इटसेल्फ इज एन अम्ब्रेला फ्रेमवर्क, ठीक है। अब उसके अंडर जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वो क्या क्या डेवलपमेंट्स नए लेके आती है, वो सारे एनईपी के अंडर फॉल करेंगे, बिकॉज एनईपी ने गाइडलाइंस दे दी कि हमको ऐसे एजुकेशन करनी है, हमारी जो एजुकेशन को देखने का नजरिया है, the perspective has not changed and we are aiming at this particular thing। तो हमने एम्स, गाइडलाइंस, वो सब मार्क फ्रेम कर दी, ठीक है। तो हमने एक पूरा फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश कर दिया जिसके अंदर चेंजेस आते रहेंगे, और भी अगर अमेंडमेंट्स होंगे, चेंजेस आएंगे, सो दे ऑल विल बी वेलकम्ड, ठीक है। देयर विल बी एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, तो जैसे क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, credit based system, so the NEP will also be introducing the academic bank of credits, right, to establish which is to be established to facilitate transfer of credits, ठीक है। एंड क्रेडिट एज इन जो भी इंसान, जो भी स्टूडेंट कोई भी कोर्स करता है, बी इट अ सर्टिफिकेट कोर्स और अ डिग्री कोर्स, या क्रेडिट्स मीन्स एनी पॉइंट, these are basically points। तो अगर आप किसी ऐसे you are publishing a paper, then you get certain points, you are participating in a conference, you are presenting your paper, ये सारे जो भी रिसर्च या एकेडमिक से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, आपने कोई नया कोर्स किया, आपने एक स्किल अपनी अटैच करी, नई स्किल को लर्न किया, उसके भी क्रेडिट्स मिलते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, सो ये बहुत एक अच्छी चीज है। एंड ऑफ कोर्स the NEP has also will be basically has introduced the National Research Foundation. I will be sharing the notes on NEP in the Telegram link. Right, this will be National Research Foundation will be the apex body for fostering strong research culture and building research capacity across higher education. Then Higher Education Commission of India. So we will also be having a Higher Education Commission of India. Okay. This will be set up as a single umbrella body for the entire higher education, excluding medical and legal education. So इसमें क्या है, सारे education included है, but it only excludes legal education, क्योंकि legal education को कौन regulate करता है? Being law students and being future law students, you should know that. So that is regulated by Bar Council of India. ठीक है, legal education is regulated by BCI, Bar Council of India. ठीक है। and and second is the medical education, medical
education. Medical education is regulated by the All India, I think the medical body. So I think All India Medical something something. Uh, okay. So they have this medical association, right? So they deal with medical education the field of medicine. ठीक है, तो ये दो एक्सक्लूड करके बाकी सारे जो भी एजुकेशन, बाकी सारे जो भी चीजें हैं, कोर्सेज हैं, दे ऑल विल बी regulated by the Higher Education Commission of India. All right. And there will be National Higher Education Regulatory Council for regulation, General Education Council for standard setting, then Higher Education Grants Council for funding, National Accreditation Council for accreditation, and affiliation of colleges is to be phased out in 15 years. So बहुत सारी changes अभी, for example, this recent you will see that now there are universities that are coming, foreign universities like Harvard and Oxford and Yale are actually setting up, going to this has been proposed recently, that those universities will be setting up their branches in India itself. So they will be opening in India also, so universities under that name, and they will also be starting courses from that universities, from those universities, Ivy League universities also. So ye sari cheeze bhi they have, that's under the NEP vision. All right, ठीक है. So and yes, of course, you need to know the constitutional part of it. So ye, of course, article 21A है, that is right to education. ठीक है, and ये कब ऐड हुआ था? 86th Constitutional Amendment Act of 2002. ठीक है, and part apart from that, in part 4 we have article 45 and article 39 clause F of DPSP. ये क्या है? DPSP, Directive Principle of State Policies. They have a provision for state funded as well as equitable and accessible education. ठीक है, 42nd Amendment to the Constitution in 1976 moved the education from the state list to the concurrent list. So earlier education was part of the state list, it was moved to the concurrent list. So education is in the third list of the seventh schedule, concurrent. तो आप देखोगे कि सेंट्रल स्कूल्स भी हैं, स्टेट लेवल स्कूल्स भी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, राइट. एंड ऑफ कोर्स 86th अमेंडमेंट 2002 ने आर्टिकल 21A को ऐड किया था. और हमारे पास जो स्कूल लेवल यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड जो लॉ आया, दैट इज राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग द इंटायर नेम ऑफ द एक्ट. सो राइट टू एजुकेशन, ये 2009 में ये एक्ट आया है. ठीक है, all right. So we will be in today's news discussion, we will also be discussing the RTE Act. ठीक है, okay. अच्छा, so let's move forward now. The next item, news item is Delhi government seeks centers not to appoint PK Gupta as the new chief secretary. So here we will be talking about the GNCTD Act or the Amendment Act of 2021. ठीक है, Amendment Act of 2021. ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ. So अभी you all know that recently Supreme Court has delivered judgment कि जो भी services होंगी ना, services, ठीक है, administrative services, that is administrative services और bureaucracy, ये सारे किसके कंट्रोल में होंगे? जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, डायरेक्टली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है, जो भी सरकार है जो डायरेक्टली इलेक्टेड है, ठीक है, उसके कंट्रोल में ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और ब्यूरोक्रेसी आएंगे. ठीक है, बट ये जो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर transfer, appointment, dismissal of service, all the services. ठीक है, तो ब्यूरोक्रेट्स बेसिकली. तो उन्होंने बट ये नहीं बोला, उन्होंने जो GNCTT अमेंडमेंट एक्ट है यानी द गवर्नमेंट ऑफ, आई जस्ट राइट द फुल फॉर्म हियर, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली.
ठीक है, ये है फुल फॉर्म. सो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिडेट नहीं किया है. सो दिस एक्ट इज स्टिल वैलिड. सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट इनवैलिडेट इट, सो दिस इज स्टिल वैलिड. ठीक है, इट इज स्टिल वेरी मच वैलिड. एंड ये एक्ट क्या करता है? ये एक्ट सुप्रीमेसी देता है किसको? लेफ्टिनेंट जनरल को. Or gives a primacy to the Lieutenant LG over elected government in the city. Over elected government in the city. We had discussed this earlier. I'll just revise it with all of you. तो दिल्ली के पास, दिल्ली जो है उसके पास एक स्पेशल स्टेटस है नेशनल कैपिटल टेरिटरी का. ये स्पेशल स्टेटस कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम आर्टिकल 239 AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, और उसमें क्या है कि दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, they can make laws on all the matters enlisted in the subject list, in the state list, all the subject matters that have been enlisted in the state list, except land, public order, एंड पुलिस. ठीक है, तो ये तीन चीजों को, ये तीन सब्जेक्ट मैटर्स पे कौन लॉ बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट मैटर्स जो भी स्टेट लिस्ट में एनकैप्सुलेटेड है, उन सब पे लॉज जो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली है वो बनाती है. ठीक है, बट ऑफ कोर्स एज पर द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो सर्विसेज हैं, यानी कि ट्रांसफर हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, डिसमिसल हो गया, ब्यूरोक्रेट्स, ऑल द people who are under service in the Delhi government, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर जो भी लोग सर्विस कर रहे हैं, उनका अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, डिसमिसल, ये सारे जो भी चीजें हैं, दे विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, अच्छा, यानी कि जो डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उनके अंडर ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्यूरोक्रेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंडर आएगी. ओके, सो it states that the government in the national capital territory of Delhi meant Lieutenant Governor of Delhi, and it gives discretionary powers to LG. तो ये amendment act क्या करता है? It gives discretionary powers to LG. ठीक है, even in matters where the legislative assembly of Delhi is empowered to make laws. So I'll just see, जो ये tussle है ना, ये this is not common to Delhi only, although Delhi has a special status. But ये जो chief minister versus lieutenant governors का जो tussle, ये काफी जगह रहा है. This has been in Pondicherry, also in Puducherry, and of course in Delhi. So ये अभी क्यों हो रहा है ये दिल्ली में? तो इनफैक्ट इट हैज बीन वेरी कॉमन, देयर हैव बीन सेवरल जजमेंट्स दिल्ली में ऑन दिस पर्टिकुलर इशू. सो ये इस समय क्यों हो रहा है? बिकॉज अभी रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, आई डोंट वांट टू साउंड पॉलिटिकल, आई जस्ट वांट स्टूडेंट्स टू नो ऑल द फैक्ट्स. सो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी पता किया, बिकॉज कि अरविंद केजरीवाल और द आम आदमी पार्टी हैड स्पेंट a lot of public funds on the renovation and the beautification of the CM's residence. The CM's residence pe they found out कि it was crores and crores public fund was spent on CM's residence. So they had basically appointed, the central government had appointed the vigilance officer, that is the chief secretary. तो एक chief secretary appoint किया था जो कि vigilance का काम करेगा. विजिलेंस क्या? CVC, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंडर ही विल एक्ट एज द बॉडी टू सी वेदर देयर हैज बीन एनी करप्शन और नॉट, और ये सारी चीजें देखेगा. उस टाइम पे द दिल्ली गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स, दे अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट सेइंग देयर इज अ प्रॉब्लम, ब्यूरोक्रेसी पे तो हमारा कंट्रोल होगा, हम अपॉइंट करेंगे. देन सुप्रीम कोर्ट सेड कि हाँ, आप ही लोग अपॉइंट करेंगे. नाउ ऑफ कोर्स द चीफ सेक्रेटरी हैज बीन रिमूव्ड एंड न्यू chief secretary has been reinstated, that is PK Gupta.
who is the new chief secretary, has been reinstated. तो अब obviously जो reinstate कर रहे, they will all follow the Delhi government's order. तो they have been divested with all the cases, जो भी विजिलेंस कमीशन के पास, जो भी उन ऑफिसर्स के पास करप्शन से रिलेटेड जो भी केस फाइल्स थे, उन सब से उनको हटा दिया गया है. मतलब they are not any more investigating on the expenditures or CM's residence case. ठीक है, so that is the whole issue. Okay, so I hope you understood this. Acha, it seeks to ensure that Lieutenant General is necessarily granted an opportunity to give his or her opinion. So कोई भी discretionary powers and the LG has the right to give his opinion before any decision is taken. But of course, in this context also, any decision pertaining to land, public order or police. ठीक है? It bars the assembly, that is the Delhi Legislative Assembly, or its committees from making rules to take up matters concerning day-to-day administration or to conduct inquiries in relation to administrative decision. And yeah, so this is abhi, of course, this has been quite in debate because there are a lot of criticisms also, there are a lot of good things also. So let's see what the Supreme Court says. अगर ये particular matter वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात आती है, तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिडेट नहीं किया है, इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को, 2021 अमेंडमेंट को. लेट्स सी फ्यूचर में if सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेट्स एंड गिव सर्टेन पॉइंट्स related to what all is valid, what all other provisions that are still intact. So we'll again then discuss it. Okay, okay, so all right, next news item is Tamil Nadu's amended law on Jallikattu valid, said Supreme Court. Court terms it as a type of bovine sport existing in Tamil Nadu for at least a century. It also found similar laws passed by Karnataka and Maharashtra allowing bullock cart races and buffalo racing valid. Acha, what is Jallikattu? Jallikattu is a traditional sport that is popular in Tamil Nadu. So it's like a traditional sport. Okay. And this involves releasing a wild bull into a crowd of people, and the participants attempt to grab the bull's hump and ride it for as long as possible, or attempt to bring it under control. It is celebrated in the month of January. It is basically a religious traditional sport. It is celebrated in the month of January during Pongal. During Pongal, right, Tamil harvest season festival Pongal. What are associated to उसके साथ concerns क्या थे जो कि पहले थे? Initially there were certain concerns कि the primary question involved was whether Jallikattu should be granted constitutional protection as a collective cultural right under Article 29 Clause 1. Article 29 Clause 1, Article 29 जो Constitution of India का है, वो ये बोलता है कि जो भी distinct culture है कहीं का, या distinct traditional practices है, they should be preserved and they should be protected. ठीक है, तो ये state is empowered to make sure that such practices are protected. So whether Jallikattu can be given constitutional safeguard under Article 29 Clause 1, ये question था. Article 29 Clause 1 is a fundamental right guaranteed under Part 3 of the Constitution of India to protect educational and cultural rights of the citizens. The court examined if laws perpetuate cruelty. तो अगर कोर्ट ने ये बोला था कि अगर लॉ, अगर जो प्रैक्टिस ऐसी है, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, इफ इट इज perpetuating any kind of cruelty to animals, ठीक है, then it will not be protected. तो अगर कोई ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें कि एनिमल्स के ऊपर कोई क्रूअल्टी हो रही है, तो फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड नहीं दिया जाएगा. ठीक है. एंड द सर्वाइवल एंड वेलबींग ऑफ द नेटिव ब्रीड ऑफ बुल्स, तो अगर उनके सर्वाइवल को थ्रेटन कर रही है ये प्रैक्टिस नेटिव ब्रीड्स को, तो फिर तभी ऑफ कोर्स दैट विल नॉट बी गिवन एनी काइंड ऑफ सेफगार्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो अब क्या हुआ है कि उन्होंने जो तमिलनाडु गवर्नमेंट थी, दे हैव आल्सो अमेंडेड द रीसेंट दिस थिंग
See, the Constitution Bench headed by Justice K.M. Joseph upheld the validity of the Prevention of Cruelty to Animals Tamil Nadu Amendment Act of 2017. तो एक लॉ है Prevention of Cruelty to Animals. ये एक सेंट्रल लॉ है और स्टेट्स ने भी अपने अपने लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इस पर्टिकुलर लॉ को वैलिडेट कर रखा है और रेटिफाई कर रखा है, यानी कि स्टेट्स ने भी अपने स्टेट्स से रिलेटेड रेगुलेशंस बना फ्रेम कर रखे हैं, ड्राफ्ट कर रखे हैं, राइट? ठीक है. एंड दिस इज प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स, पीसीए इज अ सेंट्रल लॉ ऑल्सो, जो कि एनिमल्स के प्रति कोई भी क्रूअल्टी को रोकता है, प्रोहिबिट करता है. ठीक है. एंड दूसरा है द सेकेंड लॉ, दैट इज तमिलनाडु स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स, कंडक्ट ऑफ जालिकाटू रूल्स ऑफ 2017. तो ये जो रूल्स हैं 2017 के, ये इन रूल्स पे बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में गया था मामला. सुप्रीम कोर्ट ने अब बोला है कि ये जो रूल्स अभी अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, वो जो अमेंडमेंट है वो वैलिड है. तो probably they have the amendment act. Now the Supreme Court has stated that the amendment act has received the presidential assent. Amendment act को presidential assent मिल चुका है. We do not think there is any flaw in the state action, right? The court also found similar laws passed by Karnataka and Maharashtra allowing bullock cart races and buffalo racing, Kampala. ठीक है. And so the Constitution Bench held that Jallikattu law substantially minimizes the pain and suffering of animals participating in the event. The judgment authored by Justice Bose, however, directed that the district administrations and competent authorities would be responsible to ensure that Jallikattu events are conducted in strict compliance of the safeguards laid down in the 2017 Amendment Act and Rules. ठीक है. तो बेसिकली व्हाट दे हैव अर्लियर जो भी ऑब्जेक्शंस थे, अब उन ऑब्जेक्शंस को नाउ ऑफ कोर्स आफ्टर अमेंडिंग द पर्टिकुलर रूल्स एंड लॉज, दे हैव नाउ secured validity from Supreme Court and as well as constitutional safeguard. ठीक है. ओके. अच्छा, अब हम एक चीज, मुझे बिकॉज ये जो आर्टिकल है, ये न्यूज आइटम है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है, विच इज नोन एज इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस. ठीक है. इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या है? अब नॉट जस्ट जल्लीकट्टू, बट you will see cases related to essential religious practices in many things. For example, अभी जैसे हिजाब राव केस हुआ था, राइट? हिजाब राव केस, एंड उसके अलावा यू हैड सेवरल केसेस लाइक एंड ऑफ कोर्स लॉट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल कई सारे, अभी जैसे कोई भी इशू होता है, ठीक है, लाइक एक और बीच में, यू नो, देयर वाज दिस इशू, मुस्लिम वुमेन वेदर दे कैन एंट्री, मुस्लिम वुमेन्स एंट्री टू एंट्री इनटू मॉस्क. तो बहुत सारे ऐसे कई सारे, यू नो, इश्यूज आए हैं पहले भी. ठीक है. तो उसमें ये देखा जाता है, अगेन, यू नो, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, स्लॉटरिंग slaughtering of cows and other cattle. तो जब भी कोई ऐसा इशू आता है जो कि कंट्रोवर्शियल होता है, जिसमें कि, यू नो, कहीं ना कहीं उलझा हुआ होता है बिटवीन रिलीजन एंड व्हाट आर द रीजनेबल. देखो, पहले तो आर्टिकल हमें ये समझना पड़ेगा, जो आर्टिकल 25 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, इट प्रोवाइड्स अस फ्रीडम टू रिलीजन, फ्रीडम टू रिलीजन की बात करते हैं. बट उसके कुछ फ्रीडम टू रिलीजन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, फ्रीडम टू प्रोफेस, फ्रीडम टू प्रोपोगेट, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं फ्रीडम टू रिलीजन में. ठीक है. उसके अलावा कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं.
ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है? हेल्थ, मोरालिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, ये कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि रिलीजन में देखे जाते हैं कि कोई भी ऐसी प्रैक्टिस तो नहीं है जो कि हेल्थ को यू नो हेल्थ जिसमें अफेक्ट हो रही हो एडवर्सली, या किसी की या मोरालिटी पे क्वेश्चन आ रहा हो, या फिर पब्लिक ऑर्डर पे, तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल देखे जाते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 25। ठीक है, सो कोर्ट्स जब भी ये फाइनली डिसाइड करते हैं तो वो एक डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी को रिफर करते हैं। उनको जब डिसाइड करना होता है then they refer to a concept called doctrine of essentiality। ठीक है, तो वो ये इस डॉक्ट्रिन के थ्रू ये टेस्ट करते हैं, दिस इज अ टेस्ट बेसिकली टू डिटरमाइन वेदर अ प्रैक्टिस इज एन इसेंशियल प्रैक्टिस और नॉट। मतलब अगर कोई प्रैक्टिस है इन क्वेश्चन, ठीक है, अब वो प्रैक्टिस वो रिलीजन में कितनी इम्पोर्टेंट या कितनी एसेंशियल है। अगर वो एकदम इतनी एसेंशियल प्रैक्टिस है कि उसके बिना जो रेगुलर चीजें हैं वो रुक जाएंगी, या जो रेगुलर द रिलीजियस अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस विल बी अफेक्टेड इफ दिस प्रैक्टिस इज स्टॉप्ड, देन इट विल कॉन्स्टिट्यूट एज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। अदरवाइज अगर कोई नॉर्मल प्रैक्टिस है, ठीक है, विच इज नॉट fulfilling the test criteria, then it will not be considered as an essential practice, तो उसको curtail कर दिया जाएगा, उसको curve down कर दिया जाएगा। ठीक है, and that will not be given validity by Supreme Court। तो doctrine of essential test या essential religious practice, ये generally it is used by Supreme Court and High Court, different high courts, for understanding ki what are the essential religious practices। All right, okay, all right, so let's move ahead. If you have any questions or any doubts related to anything that we are covering in the today's discussion, then you can please write it in the comment section below, or in the live chat, or in the comment section. Even if I don't see it right now, I'll see it later and I'll reply। Okay, अच्छा ठीक है, we'll move ahead now। अच्छा, this is chalk out plans to ensure children aren't malnourished, high court। पहले तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं आर्टिकल, पहली बात तो आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ में सब चीजें आ जाती हैं। तो अगर बच्चे malnutrition, मतलब टू इंश्योर इट इज अ राइट ऑफ अ चाइल्ड टू बी कंप्लीटली नरिश्ड। नरिशमेंट उस बच्चे का भी फंडामेंटल राइट है, टू बी प्रोवाइडेड बाय नरिशमेंट। ठीक है, एक्सक्यूज मी, to be provided with nourishment is also a fundamental right of a child। ठीक है, but and this is part 3 of the constitution, part 3 fundamental right। अगर हम part 4 की बात करें, यानी कि डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 47 कॉन्स्टिट्यूशन के। ये दोनों आर्टिकल्स क्या बात करते हैं कि एक तो बच्चे की चाइल्ड्स केयर, टॉक अबाउट चाइल्ड्स केयर एंड ऑफ कोर्स एजुकेशन। सो एजुकेशन यहाँ नहीं, बट चाइल्ड्स केयर की बात करते हैं कि बच्चों की केयर करनी चाहिए। एंड दूसरी चीज है कि इंक्रीज और इंश्योर प्रॉपर नरिशमेंट। नरिशमेंट इंश्योर करना, बच्चों को प्रॉपर नरिशमेंट मिल रहा है, ठीक है, द न्यूट्रिशन लेवल इन द फूड, इसको इंश्योर करना किसका काम है? कि ड्यूटी है गवर्नमेंट की। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स। ठीक है, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड, और इसके ये कौन डील करता है सेंट्रल लेवल पे? इट इज डेल्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आपने देखा होगा आंगनवाड़ीज होते हैं, राइट? You have midday meal programs, Anganwadis, just write it here, Anganwadis, midday meal programs,
इसमें नॉट जस्ट न्यूट्रिशन मतलब सिर्फ खाने से रिलेटेड नहीं है, इसमें वैक्सीनेशन की भी बात आती है। जब बच्चे पैदा होते हैं उनको सर्टेन वैक्सीनेशंस भी दिए जाते हैं, ठीक है। और पोलो, ठीक है, जैसे तो सॉरी, पोलियो की जो पोलियो ड्रॉप्स दी जाती थी, अभी भी दी जाती हैं पोलियो ड्रॉप्स, ठीक है। हम सबने छोटे में तो मतलब ली हैं पोलियो ड्रॉप्स। एंड आई थिंक बड़े लोग भी काफी टाइम तक उन्होंने लिया था। तो जब तक पोलियो इरेडिकेट नहीं हुआ था तो एवरीवन हैड टू टेक पोलियो ड्रॉप्स। नाउ ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन, अब बहुत सारे तरह के वैक्सीनेशंस हैं, ठीक है, लेना पड़ता है। एंड आई थिंक अब तो कोविड वैक्सीन भी बच्चों के लिए भी आई थिंक आ गई है, जो भी छोटे बच्चे हैं, ठीक है। सो वैक्सीनेशन, पोलियो ड्रॉप्स या मिड डे मील्स, आंगनवाड़ी, ये सारे प्रोग्राम्स हैं। दिस इज what are the targets released to curb malnutrition? So the targets, they aim at reducing stunting and undernutrition, underweight prevalence among children. uh, to aim is to reduce low birth weight by 2% per annum. anemia बहुत सारे बच्चों में होता है, ठीक है, तो उसको कम करने का टारगेट है। एंड इंक्रीज इन द टोटल फर्टिलिटी रेट, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट्स भी करते रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स अपने लेवल पे करते हैं, बट सेंट्रल कुछ प्रोग्राम्स हैं। वी हैव पोषण अभियान। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, तो ये है नेशनल NMM, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, जिसको पोषण अभियान भी कहते हैं। to ensure malnutrition free India by 2022, anemia मुक्त भारत अभियान, मिड डे मील स्कीम, ठीक है, एंड द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। सो वी हैव द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑल्सो। दो 2013 का। It aims to ensure food and nutrition security for the most vulnerable through its associated schemes and programs, making access to food a legal right. Access to food एक legal right है. In fact, access to food is not just a legal right, it is a fundamental right under Article 21, access to food. ठीक है. Then we have Pradhan Mantri Matra Vandana Yojana, and we have Integrated Child Development Services Scheme. ओके, बहुत सारे सेंट्रल स्कीम्स भी हैं। और यहाँ पे जैसे ये जो न्यूज आइटम है, ये उड़ीसा हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है उड़ीसा गवर्नमेंट को। उड़ीसा गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा टू ensure complete absence of severe acute malnutrition children and reduction of moderate acute malnutrition, ठीक है। तो ये गोल दिया है बाय द उड़ीसा हाई कोर्ट टू द उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, नेक्स्ट इज, नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। हमने फर्स्ट न्यूज आइटम कवर किया था, दैट वाज रिलेटेड टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। अभी हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट की। फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ठीक है। आर्टिकल 21A, Article 21A was introduced by the 86th Constitutional Amendment Act of 2002. Article 21A talks about right to education as a fundamental right, क्योंकि 21A है तो fundamental right है, fundamental right, and which is part 3 of the Constitution of India, ठीक है। अच्छा, and this is 86th Constitutional Amendment Act। उसके बाद ये तो इंसर्ट हुआ था 1976 में, जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में। उस टाइम पे एजुकेशन, जो कि एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर था, उसको शिफ्ट कर दिया था कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में यानी कि अब आप देखोगे स्कूल्स की अगर हम बात करें तो स्कूल्स स्टेट लेवल पे भी स्कूल्स होते हैं, सेंट्रल स्कूल्स भी होते हैं, ठीक है। स्टेट स्कूल्स एंड सेंट्रल स्कूल्स दोनों होते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद 2009 में, ये 2002 में 21A आ गया था, बट 2009 में आया राइट टू
फ्री एंड कंपल्सरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री एजुकेशन एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, ओके। तो ये क्या बोलता है, पहले दो कीवर्ड्स तो इसके नाम में ही है, यानी कि गवर्नमेंट का काम है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट किसमें, जो स्टेट के जो भी स्टेट में लोकेटेड स्टेट स्कूल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स दे कम अंडर द एम्बिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और जो सेंट्रल लेवल पे जो भी सेंट्रल लेवल पे जो भी स्कूल्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के परव्यू में आते हैं। ठीक है, तो स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे जो भी गवर्नमेंट है, दे हैव टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। एंड उसमें क्या होता है कि 25% सीट्स हर स्कूल में रिजर्व की जाती हैं फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू backward, socially and educationally backward classes। socially and educationally backward classes में कौन कौन आ जाता है, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, ओबीसी, मतलब बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, एंड नाउ ऑफ कोर्स अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी ऐड हो गई है इसमें। तो 25% सीट्स स्कूल्स को एम्प्टी रखनी होती है, एम्प्टी नहीं मतलब दे हैव टू बेसिकली इंश्योर कि उन सीट्स पे वो 20, अगर 100 सीट्स हैं किसी एक पर्टिकुलर क्लास में, तो उसमें से 25 सीट ऐसे स्टूडेंट्स को मिलेंगी, या जो जो कि शेड्यूल सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करते हैं। उसका एक क्राइटेरिया भी ये है कि अगर आपका स्कूल, जैसे इफ द स्कूल इज लोकेटेड हियर, तो विद इन अ रेडियस ऑफ 2 किलोमीटर्स, ये है 2 किलोमीटर्स, तो 2 किलोमीटर के अंतर्गत ही आप किसी कोई यहाँ पे जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करते हैं, तो वो सिर्फ उन्हीं स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं 25% रिजर्वेशन के लिए, जहाँ पे जो कि 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे जो स्कूल्स हैं विद इन 2 किलोमीटर रेडियस, उन्हीं स्कूल्स में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस थिंग। तो ये क्राइटेरिया है। ठीक है, एंड अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल और क्या फ्रेमवर्क है, अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 21A वी हैव आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 39 क्लॉज F ऑफ ये हमारा डीपीएसपी पार्ट 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दे प्रोवाइड फॉर equitable and accessible education, equitable and accessible education। ठीक है, ओके, ऑलराइट। अच्छा हाँ, ये जो सीट्स हैं दे आर रिजर्व फॉर 6 to 14 years of age ग्रुप के बच्चों के लिए, 6 to 14 years of age ग्रुप के। ठीक है, तो ये है। अच्छा, एंड ऑल्सो वी डिस्कस डीपीएसपी आर्टिकल 51A के, यानी कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है। दिस इज फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ whom? फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स, गार्जियंस टू सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल। पेरेंट्स हो गए, गार्जियंस हो गए, उनकी ये ड्यूटी है कि जो बच्चे हैं घर में उनको स्कूल भेजा जाए। और ये कब ऐड हुआ था, ये जो आर्टिकल है फंडामेंटल ड्यूटी का, इनफैक्ट ये आर्टिकल बेसिकली 2002-86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ही ऐड हुआ था। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज 1976 में आ गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, बट ये दिस वाज एडेड इन द 2002 कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2002। ठीक है, एंड अच्छा, इसमें जैसे यहाँ पे ये जो न्यूज आइटम है, मैंने इस पूरे न्यूज आइटम का कवर नहीं लिया, यू कैन गो अहेड एंड रीड द एंटायर न्यूज आर्टिकल, राइट, इट्स क्वाइट लार्ज एंटायर पेज। सो ये यहाँ पे बोल रहे हैं इनसाइड झारखंड सिंगल टीचर स्कूल्स, तो यानी कि यहाँ पे झारखंड में कई सारे ऐसे गांव गांव में या रिमोट एरियाज में ऐसे भी स्कूल्स हैं जहाँ पे सिर्फ एक टीचर
उन स्कूल्स में जहाँ पे वल्नरेबल, जो सोसाइटी के जो वल्नरेबल सेक्शन को बिलोंग करते हैं वैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। और वहाँ पे क्या है कि बस एक ही पर्सन है जो कि पूरे स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल रहा है, उन बच्चों को पढ़ा भी रहा है। ये सारी चीजें ऐसी हैं, और ये सिर्फ झारखंड में नहीं, ये काफी जगह पे देखी गई, कॉमन है। और उन स्कूल्स में फैसिलिटीज या ये सब नहीं है, बिकॉज उतना फंड नहीं है, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इस वजह से क्या है कि एक एक या इक्का दुक्का लोग ही उस स्कूल को चला रहे हैं। तो जो आरटीई एक्ट है वो एक रेशियो प्रोवाइड करता है, ठीक है। दिस इज द स्टूडेंट टीचर रेशियो। अब ये हो सकता है स्टेट के जो रूल्स हैं, स्टेट रूल्स बनाता है ना, स्टेट के जो रूल्स हैं उसमें डिफरेंट हो, बट ये आरटीई एक्ट के जो रूल्स हैं, सेंट्रल सेंट्रल जो एक्ट है उसके भी एक रूल्स हैं जो कि सेंट्रली एप्लीकेबल है सारे स्टेट्स पे। वो प्रोवाइड करता है कि 30:1 का रेशियो होना चाहिए स्टूडेंट टीचर का। यानी कि एक टीचर के बदले मतलब 30 स्टूडेंट्स को एक टीचर पढ़ानी चाहिए, तो एक टीचर 30 स्टूडेंट्स को ही पूरा वो करे, ताकि जो सारे बच्चों पे ध्यान दे पाए वो टीचर, ठीक है। दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव, राइट। सो स्टूडेंट टीचर रेशियो एंड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी गई है, राइट, जो कि अभी भी बहुत सारी जगह पॉसिबल नहीं हो पाता। ऑल्दो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर कि अगर कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, स्पेशली अगर वो गवर्नमेंट स्कूल है तो, राइट, कि वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए फॉर स्टूडेंट्स बेनिफिट एंड स्कूल वर्किंग डेज। और इसमें ये भी है, इसमें आरटीई ये भी बोलता है कि डिटेंशन नहीं होती, जो स्टूडेंट्स आते हैं अंडर द आरटीई एक्ट, दे आर नॉट डिटेन्ड, right, they are not uske although there are a lot of criticisms also under the act, but yeah, we'll not go into that. Understanding certain features is sufficient, right? Okay, all right. So there are several schemes: सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑन टीचर एजुकेशन। बहुत सारी फीचर्स हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फ्रॉम योर क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू, यू नीड टू नो द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन। ओके, अच्छा, नाउ वी टॉक अबाउट वार्निंग, ठीक है। इंडिया मस्ट invest in infrastructure that boosts defense against disasters. So we are now facing climate change, and we are facing climate change induced disasters. अभी जो नेक्स्ट आर्टिकल है, एक्चुअली दैट इज ऑल्सो सिमिलर। ये जो साइक्लोन मुका आ रहा है, दिस करंटली इट्स इन म्यांमार, अफेक्टिंग म्यांमार, तो दिस इज ऑल्सो अ साइक्लोन, दिस इज ऑल्सो अ क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर। ओके, so let's see what are some international environmental conventions related to climate change. So जब आप इंटरनेशनल आप environmental law पढ़ोगे और इंटरनेशनल environment के जो conventions को समझोगे, you will see that there are several conventions on several different issues है। ozone depletion पे conventions हैं, you will see sustainable development goals पे हैं, you will see conventions related to climate change specific, ठीक है। तो अलग अलग इश्यूज पे अलग अलग कन्वेंशंस आए हैं बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व करने के लिए अलग। बट क्लाइमेट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कौन कौन से कन्वेंशंस हैं, लेट्स जस्ट सी दोस। ओके, first of all, international environmental conventions are legally binding agreements negotiated among the governments to take action together to combat or mitigate a global environmental threat. Reaching an agreement to take such action among sovereign nations to diverse interests in no small feat. Okay, right. So we have, of course, first we'll talk about the. So first we'll talk about the major important this thing, the summit, most important one, which is the Kyoto Protocol, right?
also the Stockholm Convention. So Stockholm was the first one. Stockholm जो convention है ये हुआ था 1972 में, ठीक है. जो Stockholm Convention, it happened in Stockholm, Sweden. And Kyoto Protocol उसके बाद this is also an international agreement linked to UNF triple C. So let's see what are the. So we have United Nations Framework Convention on Climate Change. Okay. And this was signed in 1992 at the यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कि अर्थ समिट हम जिसको बोलते हैं. अर्थ समिट अलग अलग टाइम फ्रेम्स में हुआ था. तो अर्थ समिट कई बार हुआ है. 1992 में हुआ है, ठीक है. उसके 2 साल बाद 10 साल बाद 2002 में हुआ है, फिर 2012 में हुआ है, ठीक है. सो वी हैव अर्थ समिट. 1992 वाला जो समिट है उसको वी कॉल इट द रियो समिट और द रियो डिक्लेरेशन, ठीक है. एंड 2002 वाला अगेन वी कॉल इट अर्थ समिट 2002, ठीक है. सो दिस इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन और फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. And India is among select few countries to have hosted the COP or the Conference of Parties to all three. So first you need to understand UNF triple C, okay? And for your exam point of view, this came into force in this was signed in 1992, right? Under the Earth Summit 1992 रियो डिक्लेरेशन में. रियो डिक्लेरेशन के साथ साथ कई सारे लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स आए थे, ओके. एंड क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? ये एक्चुअली रियो के बाद हुआ है. क्योटो इज इन जापान. क्योटो इज इन जापान एंड this was signed in 1997 and it came into force in 2005. Or Rio Declaration, Rio is in Brazil. Rio de Janeiro, so Rio in Brazil. Okay, so questions related to these can be asked as your static questions. Okay, recognize the developed countries are principally responsible for the current high levels of greenhouse gases. तो यहाँ पे greenhouse gases की बात हुई थी. Greenhouse gas emissions in the atmosphere as a result of more than 150 years of industrial activity. And under this UNF triple C only we have something called conference of parties, ठीक है. conference of parties होती है, यानी कि हर कुछ सालों में, हर इनफैक्ट every year they meet. So we have conference of parties. So you need to remember कि अभी latest I think the COP27 took place in Glasgow in Sweden, if I'm not wrong. I'll have to check it though, ठीक है. अभी 29th I think होगा, अभी 28 हो चुका है, 29 will take place. So you need to find out कि ये कहाँ हुआ था और ये कहाँ हुआ है. So this is your task, ठीक है. You can write it in the comment section also. All right, another very important agreement is related to climate change is the Paris Agreement. Paris Agreement was adopted in 2015 यानी 2015 to address climate change and its negative impact. Climate change and its negative impact. It aims to reduce the global greenhouse gas emissions. So it aims to reduce the GHG emission, global greenhouse gas emission, and limit the global temperature. अभी global temperature की बात हो रही है ना. We have to limit the global temperature below 2 degrees Celsius, ठीक है. And above, while pursuing means to limit increase to 1.5 degrees Celsius by 2100, ठीक है. तो इसकी बात चल रही है. नाउ ऑफ कोर्स वो जो टारगेट है उसको 2050 का कर दिया गया है. 2050 का टारगेट, अर्लियर द टारगेट वाज फॉर 2030. अभी टारगेट ईयर इंक्रीज करके ईयर बाय 2050 कर दिया है कि ये टारगेट है जो कि हमें 2050 तक पूरा करना है, राइट. एंड
And of course, we have our sustainable development goals, जो कि Paris Agreement में ही they were formed. And so we have 17 goals. जो goal number 13 है, it talks about climate change. And you will see goal number 17 talks about partnerships यानी कि international partnerships for fulfilling goals. So many you'll find several international groupings, several states coming together to uh, you know fulfill the goals or complete the goals, or even the multinational organizations. ठीक है? Okay, so अच्छा, so let's understand कि अभी ये क्या है disaster, because we are talking about climate induced disaster. Climate induced disaster क्या है basically? First पहले उसको समझो. Climate change कैसे हो रहा है? Climate change हो रहा है because we have been releasing since the last 150 200 years, we have been releasing greenhouse gases in the atmosphere. ग्रीन हाउसेस गैस क्या करती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस वो ट्रैप कर देती हैं. ठीक है, दे फॉर्म दिस लेयर. ठीक है, एक तो ओजोन डिप्लीशन हुआ है बहुत ज्यादा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट ओजोन डिप्लीशन की वजह से भी बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस अभी क्या कर रही हैं? दे आर रिफ्लेक्टिंग, दे आर बेसिकली अब्सॉर्बिंग द हीट दैट इज कमिंग फ्रॉम द सन. तो पहले क्या होता था कि a certain amount of energy that was coming from the sun was reflected back, certain amount of heat. ठीक है, and earth only required like 0 point, I don't know the exact percentage, but earth only required that percentage for complete survival. Now what is happening, because they are trapping the heat from the sun, तो उससे क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, राइट? द ग्रीन हाउस gases are trapping the heat, and one of the greenhouse gas is carbon dioxide. CO2 is one of the greenhouse gases. And if someone asks you what is the see, water vapor is also uh, a kind of a greenhouse gas. Okay? Water vapor is also, and CO2, right? And okay, so there are of course other gases as well. So what they are doing, they are causing global warming. अभी global warming से exactly क्या हो रहा है? A lot of glaciers, you'll see a lot of ice is melting in several parts of the glacier. बहुत सारे जो भी ऐसे regions थे which were ice capped, they have started melting. ठीक है, और उतनी जल्दी उन पे जो cover है आइस का, वो फॉर्म नहीं हो पा रहा है, because there is still heat in the atmosphere. What is happening is there's a जो अगर for example, if this is a let's say माउंटेन, ठीक है, एंड लेट्स से यहाँ पे इतना सारा आइस कवर था, ठीक है, और ये सारा मेल्ट हो गया आइस कवर. नाउ यू कैन सी जस्ट दिस मच आइस. ठीक है, एंड उसके बाद क्या होता है? विंटर सीजन आया, विंटर सीजन में वापस से आइस स्नोफॉल हुई, एंड वापस से आइस कवर हुआ. बट बिकॉज देर इज हीट, तो जो आइस कवर हुआ स्नोफॉल के बाद वो इतना रह गया. ये जो पोर्शन है, जो डार्क, वट एवर इज द डार्क पोर्शन, जो भी ऐसा होता है कि सी यू विल ऑलवेज सी दिस, जो व्हाइट आइस इज व्हाट व्हाइट इन कलर. तो व्हाइट क्या करता है? इट रिफ्लेक्ट्स बैक हीट. जो भी हीट होती है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है. ठीक है, पर कोई भी जो डार्क पोर्शन होगा, यानी कि समथिंग दैट इज डार्क इन कलर, इट अब्सॉर्ब्स हीट. ठीक है, मुझे इस कॉन्सेप्ट का भी नाम याद नहीं आ रहा है. I'll recall it and I'll actually type it in the comment section. But ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि क्या होता है, कोई भी डार्कर सरफेस होता है, कोई भी डार्क सरफेस वो हीट को ऑब्जॉर्ब करता है, और कोई भी लाइटर सरफेस होगा वो हीट को रिफ्लेक्ट करेगा. दिस इज अ साइंटिफिक फिनोमेनन. ठीक है, तो यही चीज क्या हो रही है कि ये ग्लोबल लेवल पे हो रही है, बिकॉज एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा हीट अप हो गया है कि अब जो आइस कैप्स हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं. ठीक है, एंड उनका जो लैंड एरिया है, यानी कि जो लैंड मास है, जो आइस मतलब आइस बिकॉज मेल्ट हो गई, तो लैंड अभी अनकवर हो गया. अब लैंड बिकॉज अनकवर हो गया, जो डार्कर एरिया है दैट इज नाउ अनकवर्ड, तो दैट इज अब्सॉर्बिंग हीट. तो उस पर आइस अगर फॉर्म भी होती है तो जल्दी मेल्ट हो जा रही है, because it is trapping a lot of heat.
right? So this is what is happening. उससे क्या हो रहा है? Of course sea level is rising, sea level is rising, sea level rises equilaterally everywhere. So sea level क्योंकि सब जगह equally rise कर रहा है, lot of you will see small island nations are submerging, or some small island nations are in threat because water is covering their entire land, and it is they are submerging in the water. And उससे बहुत सारे of course जब भी ऐसे कुछ होता है, इट ऑल्सो द हीट ऑल्सो अफेक्ट्स द करंट्स, ग्लोबल जो करंट सिस्टम है, या जो प्रेशर्स है, प्रेशर का हमने पढ़ा था कि जो भी प्रेशर होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, राइट? तो ये हमेशा हाई प्रेशर कहाँ पे होता है, लो प्रेशर कहाँ पे होता है? लो प्रेशर हमेशा हीट जहाँ पे वार्म होता है वहां पे होता है, हाई प्रेशर कोल्ड एरिया में होता है, राइट? तो कई जगह ये प्रेशर साइकिल, जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो डिस्टर्ब हो गई हैं अर्थ की, ठीक है? जो नॉर्मल करंट्स थे वो डिस्टर्ब हो गए, उसकी वजह से यू विल सी अ लॉट ऑफ जैसे एल नीनो हो रहा है, ठीक है, ला नीना हो रहा है, ये सारे कुछ फिनोमिनन्स हैं विच आर क्लाइमेट रिलेटेड फिनोमिनन्स, और इनकी वजह से बहुत सारे डिजास्टर्स हो रहे हैं. Disasters are happening, different disasters. You'll see floods, you'll see hurricanes, you will see um, and you will see drought situations, ठीक है? Droughts and so ये सारे, these are what, these are climate induced disasters, ठीक है? And of course we have global frameworks for it. We have a world conference, 1994 में एक world conference establish हुई थी on natural disaster reduction, ठीक है? एंड 1994 में, एंड उसके बाद वी हैव हैड यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये 1999 में हुई थी. I'll share the notes with all of you in the telegram, ठीक है? एंड वी हैव, of course we have the yogo framework also for action, right? कैसे डिजास्टर को मैनेज किया जाए, ठीक है? 10 year प्लान. उसके बाद वी हैव द सेंडाई फ्रेमवर्क. तो क्लाइमेट, ये देखा गया कि क्लाइमेट से सिर्फ नहीं लड़ा जा सकता है, बिकॉज क्लाइमेट दैट्स नेचुरल ना, आप उसको एकदम से कर्व नहीं कर सकते हो. यू विल हैव टू ऑब्वियसली टेक स्टेप्स टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस, यू विल हैव टू टेक स्टेप्स की जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं वो कम हो, ठीक है? ये तो स्टेप्स स्टेट्स लेंगे ही, बट उसके साथ साथ जो डिजास्टर्स आ रहे हैं उन पे कैसे रिस्पॉन्स करेंगे? तो वी नीड टू मैनेज द डिजास्टर्स. डिजास्टर मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइमेट, बिकॉज आज के टाइम में क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स आर अ कॉमन थिंग. Everywhere in the world you will see climate induced disasters. So disaster management is very important. Response, how are we responding, how are we preparing for disasters, for what is our preparation, what are the steps for mitigating disasters, right? How are we responding, how are we taking action against the disaster management? तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? इंडिया में इसीलिए वी हैव द एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वी हैव द एसडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है? एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल्स आल्सो वी हैव द डीडीएमए, disaster management authorities, ठीक है? We had discussed in one of the previous sessions also in detail. Anyway, I'll be sharing notes. So what you need to understand is कि disaster is now a very common thing, especially when we talk about the climate induced disasters, okay? And that India, of course, India has launched ये इस ऑपरेशन का नाम क्या है? अगेन ये जीके का भी क्वेश्चन हो सकता है. ऑपरेशन करुणा टू असिस्ट म्यांमार. आज एक और ऑपरेशन न्यूज़पेपर में मेंशन था, दैट वाज ऑपरेशन ध्वस्त. ऑपरेशन ध्वस्त, although that was not related to that was related to actually drug terror, ठीक है? ड्रग टेरर, नार्को टेररिज्म से रिलेटेड था, ठीक है? और उसमें पंजाब एंड हरियाणा के स्टेट्स में, पंजाब एंड हरियाणा,
कि स्टेट्स में जो इलीगल ये सब नार्को टेररिज्म चल रहा है, नार्को टेररिज्म इन सेल्फ इज एन इलीगल एक्टिविटी। सो ये जो नार्को टेररिज्म के कई सारे लोग पकड़े गए हैं नार्को टेररिज्म करते हुए, तो ऑपरेशन ध्वस्त ये है। ऑपरेशन करुणा है साइक्लोन मोका से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आप लोग प्लीज याद रखिएगा, बिकॉज ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में स्टैटिक में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज व्हाट आर आरबीआई रेगुलेशंस ऑन ग्रीन डिपॉजिट्स। तो ये है लास्ट मंथ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केम अप विद। अच्छा, ये जब भी हम लोग कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में पढ़ें तो उनके जो डायरेक्टर हैं या उनके whoever is the आरबीआई चेयरमैन, ठीक है, ये सारे जो भी फैक्ट्स है ना, प्लीज मेक श्योर दैट यू study them and you take note of it कि who is currently holding the highest position in RBI। तो ये सारे जो चीजें हैं, या किसका अपॉइंटमेंट होने वाला है, या who has been recently appointed, so on, ठीक है। So RBI came up with a regulatory framework for banks to accept green deposits from customers. Under the new framework, banks that accept green deposits will have to disclose more information on how they invest these deposits. So green deposits क्या हैं? Green deposits are not very different from the regular deposits that bank accept from their customers. The only major difference is that banks promise to earmark the money that they receive as green deposits toward environment friendly projects. For example, a bank may promise that green deposits will be used towards financing renewable energy projects that fight climate change. A bank may also avoid using green deposits to invest in fossil fuel projects that are considered harmful to the climate. A green deposit is just one product in wide array of other financial products such as green bonds, ठीक है, green shares, ठीक है, and that help investors put money into environmentally sustainable projects, ठीक है। ठीक है, तो ये from again your GK point of view is important. See, banks promise to earmark money that they receive as green deposits towards environmentally friendly projects. Banks will have to come up with set of rules and policies approved by their respective boards that need to be followed while investing green deposits from customers. The new rules are aimed at preventing greenwashing. This prevent हमने अभी कुछ sessions पहले we talked about preventing greenwashing, ठीक है, which refers to making misleading claims about positive environmental impact of an activity, ठीक है। Now you can view this article from environmental law perspective, okay, because it talks about impact on environment, ठीक है। All right, move ahead. Then national sorry, this is again from international point of view, just a second. हाँ, इंडिया इज प्लानिंग टू होल्ड क्वाड मीट इन जापान, से फॉरेन सेक्रेटरी। अब इसमें हमने क्वाड की तो पहले ही बात कर ली है, व्हाट क्वाड इज, इट्स एन इंटरनेशनल ग्रुपिंग, ठीक है, जिसमें 4 मेंबर्स हैं, important members of course. Now they are जो क्वाड समिट अभी होने वाला था, नाउ इट विल टेक प्लेस इन जापान, यानी कि जो क्वाड के जो मेंबर्स हैं, यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये दे विल बी मीटिंग इन जापान ओनली, बिकॉज G7 समिट हो रहा है where India is guest country, which will be followed by a visit to Papua New Guinea. And this is now where he will jointly lead the summit of Forum for India Pacific Islands Cooperation, FIPIC, ठीक है। तो अब मुझे ना ये एक न्यू इंटरनेशनल ग्रुपिंग है, उसके बारे में बात करनी है। सो फोरम UN General Assembly हुई थी, the 74th session, this was in 2019 में जो session हुआ था UN General Assembly का। In that session, India announced $150 million worth line of credit to the group of Pacific Island nations. तो Pacific Island nations के लिए इंडिया ने कुछ क्रेडिट अनाउंस किया था फॉर अंडरटेकिंग, क्योंकि इन्वायरमेंट की हम बात करें, एंड यू नो कि आइलैंड कंट्रीज, जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं स्पेशली, दे आर अंडर थ्रेट, ठीक है। तो कैसे हम स्मॉल आइलैंड कंट्रीज में व्हाट ऑल एक्टिविटीज कैन दे डू। सो सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के लिए, एनर्जी एंड क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, तो ये इंडिया ने अनाउंस किया था कि इंडिया विल हेल्प जो भी पैसिफिक
आइलैंड्स हैं उनको हेल्प करेगा. द इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इन्वाइटेड द लीडर्स ऑफ पैसिफिक स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स. ठीक है, पैसिफिक स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स टू जॉइन कोalition फॉर डिजास्टर. तो इन्होंने इंडिया और पैसिफिक स्मॉल आइलैंड डिजास्टर स्टेट्स ने क्या ज्वाइन किया? दे फॉर्म्ड अ कोalition फॉर. Now this item, news item is also related to your previous जो disaster से हमने जो बात की. ठीक है, disaster coalition for disaster resilient infrastructure, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही आप अपना ऐसा बना लो कि जो डिजास्टर को सह पाए इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, CDRI. So coalition for disaster resilient infrastructure, reaffirming the commitment to provide developmental assistance for capacity building. The Prime Minister proposed to organize specialized courses for the Indian Technical and Economic Cooperation Program in priority. ठीक है, and this was इंडिया और जो पैसिफिक नेशंस हैं उनके जो रिलेशंस हैं अंडर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी. सो इंडिया की एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है. ठीक है, India's relationship with Pacific Islands have deepened, and under this policy, this resulted in the setting up of an action-oriented. So this resulted in setting up of an action-oriented oriented multinational grouping named Forum for India Pacific Island Cooperation. ये कब हुई है सेट? इन 2014 में सेट हुआ है. ठीक है, एंड इट कंप्राइजेज ऑफ 14 आइलैंड कंट्रीज. 14 आइलैंड कंट्रीज. तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि 2014 में सेटअप हुआ है और 14 ही आइलैंड कंट्रीज हैं विच आर पार्ट ऑफ द फिपिक. ठीक है, ऑल राइट. ठीक है, so I hope this is clear. This is another international grouping. So I thought that I should introduce this particular grouping as well to all of you. ठीक है, अच्छा. Then this is the last one in our news today. Center pushes vaccination as lumpy skin ravages cattle. तो उसमें ये animal husbandry का है. Now I just want you to, from CLAT point of view, you don't need to go through the entire news item, but you need to know constitutional framework क्या है. So Article 48 of our constitution ये बात करता है एनिमल हस्बेंड्री की. एनिमल हस्बेंड्री यानी कि स्टेट जो गवर्नमेंट है, यानी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, बेसिकली इट इज द ड्यूटी ऑफ दैट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट टू एंश्योर द एनिमल सेफ्टी एंड जो भी उनकी ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस हो रही हैं, केयर फॉर एनिमल्स. बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती हैं, बिकॉज उसमें प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी एक्ट भी आ जाता है उसमें. लॉट ऑफ जैसे एक हुआ था ऑपरेशन फ्लड हुआ था, राइट? यू नीड टू नो दिस फ्रॉम योर जीके पर्सपेक्टिव. ऑपरेशन फ्लड हुआ था. दिस वाज लॉन्च्ड इन 1970. It helped dairy farmers direct their own development, increased milk production. ठीक है, फ्लड ऑफ मिल्क. तो ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू मिल्क, प्लीज रिमेंबर दैट. एंड राइट, उसके अलावा बहुत सारे जो वी ऑल्सो अंडरटेक लाइव स्टॉक सेंसस. हर कुछ सालों में लाइव स्टॉक सेंसस भी लिया जाता है. ठीक है, एंड उसमें देखा जाता है कि कितने एनिमल्स, कितने लाइव स्टॉक हैं इंडिया में. सो लाइव स्टॉक सेंसस भी लिया जाता है. ठीक है, एंड इकोनॉमिक सर्वे जो एवरी ईयर इट इज रिलीज. सो इकोनॉमिक सर्वे विच इज रिलीज एवरी ईयर, जो हर साल रिलीज होता है. ठीक है, तो उसमें जो लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक इज ऑल्सो मेजर्ड इन टोटल एग्रीकल्चरल एंड allied एक्टिविटीज. तो एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर, ये दोनों ही चीजें आर्टिकल 48 में कवर्ड हैं. ठीक है,
ऑल राइट, और उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 48. वी हैव अ नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम. तो एक ये जो अभी जैसे न्यूज आइटम है, इट इज टॉकिंग अबाउट डिजीज, सो वी हैव अ नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम. And we have Rashtriya Gokul Mission. ठीक है, we also have the National Livestock Mission. National Livestock Mission. And we have National Artificial Insemination Program and एनिमल हस्बेंड्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर न्यूज आइटम से रिलेटेड हैं. ठीक है, सो आई होप टुडेज सेशन वाज क्लियर. इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट ऑल वी हैव कवर्ड टुडे, right, so you can ask me those questions in the comment section and I will be happy to answer. Okay, and you can join the Telegram channel by using the link, or you can scan the barcode and so that you can get regular updates and notes related to what I am discussing, as well as the PDF of the Hindu newspaper. All right then, thank you for attending.